Hello everyone, I hope you all are doing well. So I am back with a new topic of science and technology. आज के सेशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर चर्चा करेंगे. So let's begin with the topic one by one. See, biotechnology, if you look at from exam point of view, both for prelims exam and the main exam, UPSC continuously asks question on this topic there, right? You will find that almost around 3 to 4 questions in the prelims exam. 3 to 4 questions are being asked from biotechnology and various aspects of biotechnology. Next, what you find from mains exam point of view, if you look at, so GS3 paper, you'll find on a regular basis 150 words or 250 words question on biotechnology has been asked in the exam. Like for the stem cell therapy, it has been asked in the exam. Achievements of biotechnology in India, question has been asked. Biopharma industry, it has been asked. So you'll find from regular basis question has been asked. लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे डायनेमिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक करके पूछा जाता है. तो वो उस पॉइंट में जो है थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच यू ऑल नो दैट इफ यू लुक एट बायोटेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट, वन एरिया कम्स मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. It is also called as a red biotechnology. Therapy, vaccines, drugs, right, hormones. अभी आजकल जैसे वर्ड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, राइट, और एनी काइंड ऑफ अ थेराप्यूटिक हार्मोन और थेराप्यूटिक प्रोटीन्स. सो वो हम सिंथेटिक बायोलॉजी, एक एरिया है सिंथेटिक बायोलॉजी वेर वी कैन सिंथेसाइज इन द लैब. So from health point of view, medical science, biotechnology has important role to play. Next, what comes here? Agriculture, right? Agri-biotech, which is called green biotech. If you just review previous year questions, UPSC has asked question on biofertilizers, biopesticides, right? GM crops, BT crops. अभी करंट न्यूज़ में अगर देखा जाए तो मस्टर्ड वैरायटी जो है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा बनाया गया है, हाई यील्ड एंड हर्बिसाइडल टॉलरेंट वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, वो न्यूज़ में. एंड यू ऑल नो द GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी. तो अभी इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, तो अभी मार्केट में नहीं है. एक ही जो GM क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं वो है BT कॉटन, अदर्स आर अंडर पाइपलाइन. एंड यू नो फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसका कई सारे पहलू है. बट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है. तो एग्रीकल्चर एंड द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन दैट एरिया, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर. देन यू नो इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जैसे इसमें एक आता है फर्मेंटेशन, और उसका एक बहुत अच्छा यूज़ है बायो इथेनॉल, बायोफ्यूल, है ना. तो काफ़ी इस पर गवर्नमेंट ने इम्फेसिस किया है कि इंडिया में बायो रिफाइनरी बने और सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, है ना, उसके लिए बात किया जा रहा है. तो जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है जहाँ अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, सेम वे वी कैन मेक बायो इथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चर बायोमास, राइट. So that is another very important area. Enzymes. What are enzymes? Enzymes are biocatalysts. Today enzymes are used in various industrial processes. So that is where the application comes. Then you know environmental biotechnology. Like for example, UPSC has asked a question from environmental biotechnology point of view. It was asked in the UPSC exam about DNA barcoding, where we can identify a particular organism, whether plant or animal, based on its DNA. Mitochondria, which is called powerhouse of cell, it also contains its own DNA, and that could become like a biomarker to identify whether tiger or elephant or rhinos, right. Other aspect is that food adulteration, फूड में जो मिलावट होता है, अगर कोई चीज़ का कई एनिमल का
प्लांट का है तो हम डीएनए बारकोड के थ्रू पता कर सकते हैं. दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम. एक और क्वेश्चन 2022 में प्रोबायोटिक्स के बारे में कि दोज बेनिफिशियल बैक्टीरिया और समटाइम फंजाई यीस्ट which help in the digestion, immune function, and today Yakult, a brand which is sold in market which contain those kind of beneficial bacteria. So those yogurt, curd, cheese, all those varieties, right? That has already been asked in the exam. So you'll find every year questions will be there. So in water biotechnology, इसमें एक और एरिया है जहाँ पर यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा बायो रेमिडिएशन, where we can treat contaminant, pollutant, soil, water by using microorganisms. Like, once it was asked oil japper, that's a culture of bacteria which can break down hydrocarbons, crude oil and hydrocarbons, right? Bioremediation पे itself question आया हुआ statement type question. तो मैं डाइवर्सिटी दिखा रहा हूँ कि जो भी एरियाज हैं, जो डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं, जहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, बट व्हाट इज आवर फोकस, वॉट एवर हैव बीन आस्क्ड. We have to look into new emerging areas of biotechnology. We have to look into those topics where probably questions will be asked in the exam. We will go into those topics there. I'm going to cover there. So, a lot of areas come there. Forensic biotechnology, which can be used for criminal investigation and all, law and order. And DNA fingerprint, DNA profile, where we can identify an individual based on DNA. Right, that dead bodies, right? Even sometimes murderers, rapists, assault cases, DNA fingerprint, DNA profile of criminals can be identified. Not only that, paternal, maternal identification for child and all. Again, DNA fingerprinting can be used, right? Dr. Alex Jeffrey, who developed the method. इसके अलावा और भी बहुत चीज़ जैसे क्लोनिंग है, जहाँ हम एनिमल को क्लोन कर सकते हैं, राइट? लाइक गरिमा को बनाया गया है NDRI करनाल के द्वारा. डॉली शिप विच वॉज मेड बाय एन विलमट लॉन्ग वे बैक इन स्कॉटलैंड. अभी हाल ही में चाइनीज साइंटिस्ट ने एक एंडेंजर्ड वैरायटी ऑफ मकाक, लॉन्ग टेल मकाक का क्लोन किया गया, हुआ झोंग. दे आर द नेम्स ऑफ दोज मकाक. सो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ इट. Right, stem cell therapy, gene therapy, where the abnormal gene can be corrected with the normal genes. Again, an emerging area. CRISPR-Cas9 gene editing tool, that's making headlines. Not only this one, even IVF, in vitro fertilization, test tube baby, right, where again assisting fertilization, 3-parent baby, where mitochondrial replacement therapy, changing the mitochondria, defective mitochondrial mother, it was done in UK. Question has been asked. COVID-19, the vaccine, both pre-exam and mains exam, questions have been asked. So you can see continuous, lots of questions have been asked in the exam, right? अब इसमें कुछ नए areas है जो आने वाले exam में question आ सकता है. I will now focus into that. Let us go into some area which is just, I have given a brief overview in terms of that, but now I am coming to the main thing which you have to focus on that. First thing which I am coming here, the major topics जो हैं, in biotechnology which have been making headlines and where probably questions can be asked. So we are getting into that one. The first area which comes here, that is bioprinting. Biological printing. The Hindu paper, Indian Express, करंट अफेयर मटेरियल्स, इसमें यहाँ पर इसका यूज है. अब यहाँ दो चीज़ें आती है. एक तो द स्टेम सेल, एंड पर्टिकुलरली दो स्टेम सेल्स विच आर एबिलिटी टू डिवाइड, ग्रो एंड फॉर्म एनी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. स्टेम सेल्स, they have a capacity to divide, differentiate, program to form any type of body cells, particularly pluripotent. अभी एक और स्टेम सेल का वर्ड आ रहा है जहां पे होता है मेसेनकाइमल बोलते हैं.
मेसेनकाइमल स्टेम सेल जो है MSC, उसकी भी एबिलिटी होती है डिवाइड करना और डिफरेंट किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ऑल दिस कैन बी फाउंड. एक ये है कि स्टेम सेल जो है विच कैन ग्रो एंड डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू specified body tissues or organ by using 3D printer. You know, there is something called additive manufacturing, and using such kind of stem cells, such kind of cells and tissues, we can print the organ or tissues which can be used in medical surgery and for any kind of transplantation can be done there. And second thing what comes here, that what I said, 3D printer. What is 3D printer? Is a printer, is a machine which can, based on any model or design, can print layer by layer with the given ingredient, material, that particular object for which the model is there. Imagine a kidney, that structure, and with such kind of cells and tissues, it layer by layer can print the kidney in the lab. Where? Lab condition, laboratory. Same with eye, retina, or cornea, liver, blood vessels, that can be done. So 3D printer, which is basically here, is called additive manufacturing. It's called additive manufacturing, which can print such kind of organ with the help of cells. That is possible there. हिंदू पेपर में अभी आया हुआ था, एक हॉस्पिटल है हैदराबाद में, LV प्रसाद आई हॉस्पिटल, और जो फीटस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो रूडिमेंट्री आईज होते हैं, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने वहाँ बनाए. अभी फिर न्यूज़ में रहा है कि लैब में बायो प्रिंटिंग की गई है. हिंदू में एक कॉलम आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है ना, तो उस केस में वहाँ पर आया हुआ है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कॉम्बिनेशन में. और कोई जरूरी नहीं कि हमें हमेशा स्टेम सेल यूज करना ही है. Not necessarily that always stem cells are required. Even other type of cells can be used, and then we can print whatever required tissues or organ we need. So this is a very revolutionizing technology. Bioprinting ear, bioprinting nose, and all this can be used in the surgery, medical surgery. Okay? So let's look at here. I will just get back to here. Just look at this image. है ना, ये एक मॉडल है, जैसे हार्ट. Suppose human heart, which is a pumping machine, which keeps on pumping pure and impure blood. Impure blood goes to lungs, exchange with the pure blood, and the pure blood is pumped by heart to rest part of the body. So here, we look at if we want to do the printing of a heart, human heart. Now, if you see this image carefully, what is a physical organ model? We need a model for that. Physical organ model. That is a normal heart. And that we need to replicate it. Replicate the shape and structure. Mimic the mechanical properties. That is the way. And heart is what? 4 chamber. 2 upper auricle, 2 bottom ventricle. So that has to be there. Valve, there valve, bicuspid, tricuspid valve. Valves are there, wall is there. Cardiac muscle, all be required. Without biological activity, there is a physical model. Then bioactive tissue model. We need biologically active tissues which can grow and form that human heart. So for that, if we look at stimulating tissue microenvironment, then imitating tissue structure, then biological active, and you can see here it has been printed. But you see the image here, the actual human heart has been printed.
Here normal model has been printed. Now if you see here, why we need this kind of physical model of heart? So that could be for training purpose. Like for example here, doctor-patient communication, intraoperative navigation हो सकता है, performing experiment, pre-operative planning कर सकते हैं, simulating operation, medical education training, device testing कर सकते हैं, training कर सकते हैं. तो ये physical का model जो real heart नहीं है, but when we print the real heart, this one, actual heart using bioprinting, so that can be transplanted in the human body and can function like a heart. Like what is use purpose? Cell reaction, cell therapy, in situ screening, drug screening, local tissue filling, tissue regeneration, organ transplantation. इवन अगर मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं करना है, हमें लैब में ड्रग टेस्टिंग करना है, बाकी टेस्टिंग करना है, तो रियल टाइप हार्ट के साथ कर सकते हैं. तो दिस इज वेयर द बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज एन एडवांस एप्लीकेशन. That's what I've just shown you with the diagram here. This is one of the very important area which has come up in the medical biotechnology field. और ये क्योंकि न्यूज़ में है, तो one can expect question in the exam, right? One can expect a question in the examination there. That is what I have discussed here, right? Now let me get back to another very important topic here. The first is bioprinting part of using 3D printer and all. Now let's go to the next aspect which I would like to add here. Second topic, that is which is another area which is making headline. That is gene editing tool. Human gene or animal genes or plant genes. What are the genes? The genes are made of DNA, double helical structure, the deoxyribonucleic acid, storehouse of the information. And today biotechnology can help, right, to modify, edit the genome. What is genome? Total DNA, total gene of an organism. So gene editing tools, if you look at, the first thing which comes here, which you all know this, CRISPR-Cas9. Already UPSC has asked questions on this. CRISPR-Cas9 has got the Nobel Prize also there to the scientists who discovered and developed this method in the lab. Normal when we do genetic engineering, recombinant DNA technology, where we do the modification, we use set of enzymes, what you call restriction enzymes, to cut DNA, and ligase enzyme to join two pieces of DNA together. But here, if you look at here we are not using such kind of enzymes which are normal in the lab, molecular lab being done there. What we do here, we use this kind of a system which has been discovered in bacterial immune system. The certain type of viruses called bacteriophages, which infect bacterial cell, the microorganism bacteria, and destroy the bacteria. They multiply within that. So bacteria has evolved kind of its own kind of protection. You can say its own bacterial immunity by CRISPR-Cas9, by which the virus which insert its gene that get cut into pieces so that the virus cannot multiply within the bacterial cell. This discovery by scientists in bacterial cell helped develop this CRISPR-Cas9 system, which is used in lab to do the manipulation, modification, editing of genes of various organisms. Now, so you know that CRISPR जो है, what is the full form here? It stands for clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats. This is the full form of CRISPR.
clustered, regularly interspaced, short, palindromic repeats. And Cas9 here, CA is a CRISPR, A is the associated, is an enzyme, it's called nuclease. Is a type of enzyme called nuclease enzyme which can cut the DNA, right? And the entire system work together. So what is CRISPR-Cas9? It is a system with it's called single guided SG, single guided RNA, ribonucleic acid. What is RNA? RNA is a single strand kind of a genetic material which can attach with the DNA wherever the complementary bases are there. You know, DNA is made up of ATCG, adenine, thymine, cytosine, guanine. In RNA, single strand, T get replaced by U, uracil, AUCG, adenine, uracil, cytosine, guanine. A bind with T, C bind with G. So this RNA, complementary RNA, can bind with the DNA molecule. And then this enzyme, Cas9, can come and clip like a scissor, molecular scissor, that DNA strand. So here, system with single guided RNA that is complementary to strand of DNA or gene, strand of DNA or gene that is cut by Cas9 enzyme. That's cut by Cas9 enzyme. So let's say, suppose this is the DNA or G. Gene is that DNA which has a genetic information for protein or any trait that we call as a gene. Suppose that it has to be cut. So what it will do, it will have a single guided RNA which will bind. And then that enzyme Cas9 will come and cut it. So it will cut into this part. This will get cut, this will remain there, and this will remain as there. Right? So this part get cut by the enzyme, just like a scissor. And then it can be removed, and these two pieces can be joined together to form the molecule, and the other piece is removed. Genetic modification can be done. Right? So this is a very revolutionary technique which has been developed in the lab. है ना, ये चीज़ जीन एडिटिंग टूल कहते हैं इसको, जीन एडिटिंग टूल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट। तो लेट अस लुक इनटू दिस पार्ट। अगर हम इसके वी सी हियर, राइट, CRISPR-Cas9, so this is what you see the image here. So I'll just zoom out here. If you look at this one, if you do the Google search, you'll find number of websites giving the same information. So you must know the working mechanism. Then comes application part. So if you see here this one, biggest discovery of 21st century. It was developed in 2012, gene editing tool. It revolutionized biology research, making it a faster, easier to study disease, faster drug discovery program. The application part given. Technology also significantly impacted the development of crops, new crop varieties, GM crops, food, industrial fermentation process. This is what is mentioned here, right? Then you can see here, I'll just take you to the main part of it. If you look at here, this one,
here. Even for curing disease, gene editing, gene therapy, we can use CRISPR-Cas9. Mention here, this one. Using CRISPR to cure disease. First clinical trial testing CRISPR-Cas9 in people are already underway in China. China using the Europe and the US. Scientists start venturing into tweaking our own DNA. Let's say cancer, treatment of cancer, treatment of genetic disorders like hemophilia, sickle cell anemia, right? Those, the cancer which is caused by defective gene, there's the editing part of it, and the applications are there, right? So this is what I have already discussed from the part of it. I'll write there what is the application part of it, right? I have explained what is CRISPR-Cas9. If you go to different study materials, different current affairs materials, websites, all have developed or discussed about CRISPR-Cas9. Now if you look at this one, the application part, right? So where we can do the application here? The first one is here in terms of creating new types of crops and animals, what we call as GMOs, genetically modified organisms. Then not only that, again for treating cancer caused by mutated genes, those genes which have got mutation, we can cut and remove them, right? Add the functional gene, right? Cancer and gene therapy to treat, to cure genetic disorder. There the CRISPR-Cas9 use. Then third, to design the new drugs. Now how it can be done there? We can have those with synthetic biology. Let's say therapeutic protein, recombinant protein, what we call as a recombinant proteins, hormones that the bacteria produce in the lab. Let's say insulin. Human body pancreas release insulin, which control the blood glucose level. Now today in the market we have a insulin injection, a recombinant genetically engineered bacteria that make the human insulin. Same thing, what we modify bacteria to produce human insulin as a factory, we can modify the bacteria with the help of CRISPR-Cas9. That could be done here. So here can be done. Even scientists in China has tried to develop a designer baby, right? Designer baby which can resist HIV infection. See, it may have a negative impact also there. From mains exam point of view, you have to know pros and cons both. What would be the side effect? What would be health impact, environmental impact, ethical issues in biotechnology? So those are the from mains point of view. But if you look at from prelims point of view, application part of it, where direct question applications, this becomes very important. जहाँ पर application based questions होंगे, तो वहाँ डायरेक्ट होगा ऐसे प्रीलिम्स में कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से. मेंस में आपको फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है, वो लिखना है, ठीक है. तो इज अ वेरी रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी व्हाट आई मेंशन हियर, राइट. तो ये दूसरा जगह है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच यू नीड टू रिमेंबर, राइट. तो बायो प्रिंटिंग, देन सेकेंड आई हैव गॉन टू CRISPR-Cas9, राइट.
Now what I'm coming here, another very important thing which has made a lot of headlines, that is a xenotransplantation. ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अमेरिका में पिग का जो किडनी है ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया गया, और केवल किडनी की बात नहीं है, पिग का हार्ट ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करके देखा गया, जो कि मेडिकली द पर्सन हुज हार्ट प्रॉब्लम एंड वाज टू डाई, विद द परमिशन देयर डॉक्टर डिड द जीनो ट्रांसप्लांटेशन. What is xenotransplantation here? That is a transplantation of animal organs to human beings. Pig becomes one of the very important things because pig has the organs which can be compatible, but again, you know, immune reaction. Sometime within the human beings, if we have a transplantation of organ from donor to recipient, then the recipient immune system may not accept the donor's organ. Because what is immunity? Self and non-self. Body recognizes anything which is other than the body cells. तो वहाँ होता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल ऑर्गन, एंड व्हाट मेड हेडलाइंस? पिग. तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो कि साइंटिस्ट ने किया है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, है ना. तो ये कई बार जो हम माइथोलॉजी में पढ़ते हैं ना हिंदुज़म में ऐसे आपको जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे. आई एम जस्ट गिविंग इन अ नॉर्मल अदर सेंस, जैसे कि गणेशा एलिफेंट यू हैव ऑन द हेड, राइट, वेयर दिस एज पर मैथोलॉजी शिव पुराण द हेड वॉज कट बाय इन एंगर बाय part of the Shiva, then the elephant head was added. I'm just giving example there. We find in the Hindu mythology also there such kind of gods and goddesses having such kind of a head of animal. Not only Hindu mythology, even Greeks, Romans, बाकी mythology में भी हमको मिलता है. So now mythology, when we read, we come across this kind of example. But now imagine such mythological creatures, mythological thing that is going to become the part of present day modern science and modern biotechnology. है ना, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है कि आप उसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा एक्सट्रीम केस होगा कि हेड जो है एलिफेंट का या अदर एनिमल्स का है, वो अलग चीज़ है. वो अपना अभी उस लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी या साइंस उतना प्रोग्रेस नहीं किया है. बट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, organ can be transplanted, that can be done, and that's where the scientists are doing research. Let's look at here the xenotransplantation part. I will just take you to something on this part. Let me just take you to this image. Just see this image where the pig and the potential xenotransplantation. If you look at this image here, right? Donor pig skin for burns. कई बार जो स्किन जल जाता है वहाँ पर यूज हो सकता है. पिग किडनी फॉर किडनी फेलियर ह्यूमन बॉडी में. पिग पैंक्रियाटिक आइलेट्स फॉर डायबिटीज. पैंक्रियाटिक सेल जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस विच प्रोड्यूस इंसुलिन, बट पिग दैट बीन ट्रांसप्लांटेड टू द ह्यूमन बीइंग. ये जो इमेज है, व्हाट यू सी हियर, व्हाट यू सी पर्टिकुलर इन दिस केस,
from the image point of view, if you look at, these are where scientists are trying to do it, right? And this could be a question, where the possible thing can be possible there. Now, if you see here, particularly here, if you look at here, what is the here? What is xenotransplantation? If you look at from here, xenotransplantation. So, if you see here, what is mentioned? What is xenotransplantation? Is any procedure that involve transplantation, implantation, or infusion of a human recipient of either live cell, tissues, organs from a non-human animal source. The donor in this case, cells, tissues, or organs are non-human animals, like what is given here, or human body fluid, cells, tissue, organs that have been had ex vivo contact with live non-human cells, animal cells, that is given here. So currently 10 patients die every year in the US on waiting list to receive life-saving vital organs transplantation. ये अमेरिका की बात है जो मैंने वेबसाइट खोला है. इंडिया में भी बहुत है जहां वो ऑर्गन मिलता नहीं है और वो आदमी का डेथ हो जाता है ना. ऑर्गन डिमांड इज इंक्रीजिंग देयर व्हाट कम्स मोर ओवर देयर थेरेपेटिक. तो यार जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होते हैं या जो उसके ऐसे डायबिटीज़ वगैरह है तो वहाँ पर हम ठीक कर सकते हैं सेल्स को. वहाँ पर जो है करंटली 10 पेशेंट जो है, ऑल्दो पोटेंशियल बेनिफिट्स आर कंसिडरेबल, यूज ऑफ xenotransplant raises concern regarding potential infection of recipients with both recognized and unrecognized infection agent. मान लीजिए आपने पिक का ट्रांसप्लांट किया तो उसके बाकी साइड इफेक्ट भी हो सकता है उस एनिमल का इन्फेक्शन जो है अदर पार्ट बॉडी पार्ट में हो जाए. तो इसका एक और तरीका है वेयर बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट आर वर्किंग, दैट इज हैविंग those type of animals, right, which have got human genes. Today we can use CRISPR-Cas9, we can use gene editing tool, we can modify animal and also carrying human organ. ऐसा ही पॉसिबल है कि आज हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या जीन एडिटिंग के द्वारा हम एनिमल को एडिट करें, ऐसे एनिमल्स को बनाए हैं जो कि ह्यूमन जीन के कैरी कर रहा है और उस एनिमल के अंदर जो है ह्यूमन ऑर्गन्स है और उस एनिमल से फिर हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं. इवन CRISPR-Cas9 इज बीइंग ट्राइड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग टू डेवलप दोज काइंड ऑफ modified animals carrying human organs, and that human organs can be inserted into human beings from the animals. Even that is also being possible there. उस पर भी काम चल रहा है. तो वो ये चीज़ है कि जो यहाँ पर जो मैंने बताया यहाँ पर जो है कि ये चीज़ है. बट अगेन वी हैव टू लुक द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑल्सो देयर, राइट. यहाँ बहुत सारे अब एनिमल वेलफेयर की बात होता है, एनिमल किलिंग की बात होती है, वो सारी चीज़ें. बट एक पॉसिबिलिटी है जो मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ. सो हियर xenotransplantation, if you take from here and let's say prelims exam you get a question, है ना, their question comes there, so what are the potential application of them. So here not only the transplantation of animal organs, even cells and tissues. Now where the potential applications are there, let's say suppose that here let's say skin burn. So here graft of skin cells. Then let's say here in terms of diabetes. So here graft of this all are animal based, animal skin cell. The graft of here this islet. जैसे ये cells होते हैं, right, islet, beta cells of Langerhans, which in human body. So here islets of pancreas, उस animal के pancreatic जो cell है, pancreas which produce the insulin producing cells, islets of pancreas that get grafted or transplanted there. Then again here organs such as kidney,
heart, that can be done. And the most potential thing has been seen here, pig. That has made headlines, right? That could be a part of the area where questions can be asked, even a direct question. A simple question can be asked in the exam, right? तो वहाँ पे आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, right? कुछ और ऐसे एरियाज है जो कि इमर्जिंग एरियाज में आते हैं. उसमें एक आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. आई एम नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. व्हाट कम्स हियर, that is a personalized medicine. Now personalized medicine, if you look at here, the personalized medicine has become important because each man, each human being, man and woman and all, has different type of genetic makeup. And the response to the drug or vaccine that differ from person to person, that has a molecular basis of it. So here personalized medicine is that we here treatment of diseases based on individual's response to therapy or drug depending upon his or her immunity and genetic makeup. Today, biotechnology has advanced to a stage that we can have a human genome, that total DNA and the gene of a human being that can be mapped in the lab. We can have a sequencing of that. So here, one aspect can be here, this one. Already 2001 in USA, human genome sequence has been completed. Then even in India, we have done human genome. Worldwide has been done there. So depending upon different race, different person, different location, different geography, we can have our own sequence there. That means we can have person's own genome map. Genome map that can help in understanding the molecular basis and the response to any kind of a disease, and that where the personalized medicine is getting into that, right? Future will be this one, and is advanced area. This what comes here as an advanced area of biotechnology. It comes into this. So I'll take you to something on that area here. What you can see here, which are the emerging areas in biotechnology and this personalized medicine. So let's look at here, this one. Right? What is personalized medicine? Is growing as a result of the reduced time and cost. Why it is possible? Because of the DNA sequencing method. Today we are able to understand a person's molecular basis. Now see your time and cost. First genome sequencing. If you look at first genome sequencing project that began in 1990, took about 13 years, and it took something around 2.7 billion US dollar to do the entire mapping of them. And it took as long as 13 years. 2003, the entire blueprint of human being was ready. NIH, National Institute of Health in USA. That time, it was first time done in the lab. But today, we can do in a small time frame. आज हम जल्दी से कर सकते हैं. So now you can see here, today you can buy a quick at home genome sequencing
टेस्ट अराउंड $299। आज अब घर पे टीम आएगी, और आजकल इंडिया में भी ऐसा है, केवल यूएस की बात नहीं है, इंडिया में भी, कि वो सैंपल लेके और वो सीक्वेंस करके आपका पूरा जीनोम आपको दे दिया जाएगा, और कॉस्ट हैज गॉन $299। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पर्सनलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये जो एरिया है, जो ग्रोइंग एरिया जो है, इसमें क्या चीज़ में आ रहा है, मेडिकल प्रोफेसर कैन एनालाइज। अब यहाँ क्यों पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, दे एनालाइज दैट वन। तो यहाँ प्रोफेसर कैन एनालाइज जेनेटिक्स टू आइडेंटिफाई मेडिकल रिस्क। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल रिस्क इन पेशेंट। अगर आपका जीनोम हो तो जीनोम से पता चल सकता है कि आपके फैमिली लाइन में वी अल्टीमेटली वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, whether you are predisposed to get cancer, diabetes or any kind of a non-communicable disease, उसका भी prediction किया जा सकता है। That's where the area comes here। फिर यहाँ पर ये चीज यूनिक टेलर मेड हेल्थ सोल्यूशन हो सकता है। अनदर बेनिफिट क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कि इसका डाटा कंपाइल फ्रॉम अ स्क्रीन क्लिनिकल ट्रायल्स, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम ड्रग टेस्टिंग के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, वैक्सीन को डेवलप करने में क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स, लास्ट स्टेज होता है ह्यूमन ट्रायल्स। तो अगेन बेस्ड ऑन जीनोम, द पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल और द ह्यूमंस वेयर द ड्रग हैज बीन टेस्टेड और इवन द वैक्सीन, तो बिफोर वी कैन डू जीनोम सीक्वेंस टू आइडेंटिफाई कि ऐसा तो कोई पोटेंशियल रिस्क तो नहीं है, वी कैन स्क्रीन आउट दोज पीपल देयर। Again, that is a potential application. You can see here, another benefit personalized medicine is that it uses data compiled from the screened clinical trials, enabling medical professionals to create individual treatment and therapy, right? From those insights, increase in personalized therapy advantage for general treatment. आज जो भी दवाई खाते हैं या मेडिसिन होते हैं, थेरापी तो जनरलाइज होता है, उसका एफिकेसी कितना है वो हमें बाद में पता चलता है। हो सकता है कि 100% एफिकेसी ना हो, लेकिन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन केस में एफिकेसी कैन बी मोर, पर्सन कैन रिकवर फास्ट, कैन बी ट्रीटेड वेल, दैट व्हाट कम्स हियर। ये चीज़ वहाँ पर क्लिनिकल जो मेडिकल इश्यूज जो है सोर्स लेवल पे। अब इसी में एक चीज़ है पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकीमिया विच इज ब्लड कैंसर, कॉल्ड द CAR-T सेल थेरेपी। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, CAR-T cell therapy। Swiss Pharma Novartis has developed this method called CAR-T cell therapy, T cell, which is WBC, white blood cells, can be used to treat a rare blood cancer, leukemia, which happens in American population because of genetic disorder। कुछ ऐसे पॉपुलेशन अमेरिकन हैं जो कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम कारण जब वो एडल्ट होते हैं उनमें ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर WBC के कारण होता है। तो नोवार्टिस कंपनी ने डेवलप किया मेथड कॉल्ड काइमेरिया, व्हाट इज कॉल्ड CAR-T सेल थेरेपी, दैट कैन ट्रीट द ब्लड कैंसर देयर। दैट इज अनदर थिंग व्हिच कैन बी डन देयर। अगेन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कैन हेल्प कि किस पे CAR-T सेल थेरेपी मोर इफेक्टिव होगा ऐसे पेशेंट में which suffer with this kind of a blood disorders, right? तो वहाँ दैट कैन बी पार्ट ऑफ इट। तो ये एक एरिया है। फिर आपको पता है ड्रग रिसर्च वगैरह जो है, टुडे वी यूज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट, emerging computer technologies, softwares, programs to identify new drug molecules for cancer, for malaria, for any kind of rare disease. Even for COVID-19, the drug discovery program is going on. So that comes here, this one comes, participation part of it. Clinical trial, there we can use that. अभी जो बायोटेक कंपनी का वहाँ पर है, अब एक और चीज़ अभी जो इम्प्रूव और आई कैन से एप्लीकेशन है AI इन बायोटेक्नोलॉजी, particularly biomedical part. That is, AI can be used to study the data of the patient and learn from geographical base or total population based how many cancers are there, how many tuberculosis there, how many people are dying with a particular disease there, and that can help AI system to predict in the future in a given area to have such kind of disease burden. तो वो भी एक यूज है AI का, हॉस्पिटल वगैरह में हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट US
ये इंसाइट करके है जो कि डेवलप किया गया है। AI टू स्ट्रीमलाइन वैरायटी ऑपरेशन प्रोसेस को जो है, जैसे ऑटोमेशन, आज हम इंडस्ट्री में रोबोट्स पर यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री 4.0 जो, वहाँ ऑटोमेशन के लिए AI का यूज़ हो सकता है। कहाँ पे बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ बायो फार्मा बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ AI का यूज़ हो सकता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग डन देयर। बिग डेटा, what is big data is again very advanced mathematics, statistics and computer and software, where the large data set can be stored, can be analyzed for the pattern, and then we can get the value from such data in a very faster way. That's where the big data come. Now big data has a very important role to play in genomic study. Genome sequencing, there's a huge data, and with AI and big data we can not only analyze such data, but AI can also help in terms of finding out useful information along with big data in biotech sector. That's what comes here. Big data along with IoT, Internet of Things, where sensors in the lab, imagine hospital lab systems, your different machines are there, and the machines have got the sensor, a metal sensor, and they communicate with each other. What is called IoT in the field of biotechnology. Biotech lab, all sophisticated instruments with embedded sensors, they connected to each other with internet and they communicate with each other. All the data goes to a computer system, and there they use of big data and AI to analyze all the scientific data. So the research which scientists carry out for years, that can be done in a short span of time. कम समय में रिसर्च का डाटा एनालाइज हो सकता है और उसमें अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, जो कि लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. दैट अगेन द IoT कैन ऑल्सो बी गेम चेंजर. दैट पार्ट इज गिवन हियर. हेल्थ केयर वगैरह में है तो वहाँ पर उसको काम किया. ये इमर्जिंग एरिया है. सिंथेटिक बायोलॉजी, जहाँ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल, न्यू वैक्सीन, ऑल दिस कैन बी डेवलप देयर. तो इसमें भी किया जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह में. ये सारी चीज़ें हैं, है ना. तो जितने भी नए इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका भी एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में होगा. सिंथेटिक बायोलॉजी इज द एरिया वेयर वी डेवलप न्यू टाइप ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ड्रग और वैक्सीन. वी यूज दैट. सेवरल सेक्टर्स है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर. एग्जाम्पल सिंथेटिक बायोलॉजी इन्वॉल्व बायो फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक फिल्म with thin layer, bioactive electronic film, which can be used for sensor for glucose or any kind of disease, particularly in the diagnosis of diseases. So we can fabricate in the lab, design in the lab by fabrication. So that what comes here. Here synthetic biology, we can cell engineering for therapy, where stem cell and all can be engineered, right, for any kind of a therapy or treatment. Then again automated कोरोना वायरस टेस्टिंग, राइट, जो कि RT-PCR होता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, जहाँ स्वैब वगैरह लेते हैं, नेजल स्वैब, थ्रोट स्वैब, फॉर डूइंग द टेस्टिंग एंड टू फाइंड आउट कोविड inside the human body to that person. So that all those data can be analyzed very, very fast, or we can do the testing part of it. Again, that is a part which can come, coronavirus testing using sequencing. Again, that is again, all this can come into synthetic biology, right? तो ये एक एरिया है जो पार्ट है. चैलेंजेस वगैरह जो पार्ट है वो दैट कम्स फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर ऑल दीज आर एडवांस टेक्नोलॉजी. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉस्ट, right, and it will require a lot of input to develop it, right. So it's not a very easy task in terms of having such kind of area there, right. So that's what it always need such kind of investment, high tech research, right. फिर मैंने बताया बायोटेक में मैन पावर रिक्वायर्स इज वेरी वेरी हाई मैन पावर रिक्वायरमेंट इज देयर, राइट. Not only you require high manpower, but also you require the skilled manpower, right. It takes a long time to get the things developed there. These are challenges there. इंडिया में आत्मनिर्भर भारत में भी बायोटेक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी द्वारा काफ़ी इसमें प्रयास किया जा रहा है. तो वो सब एरियाज है ना. तो दिस ऑल पार्ट विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम
point of view, right? That you have to understand. So we have gone into personalized medicine here. Now what I'll do here, the fifth area, I would like to discuss about vaccine. Right? What is vaccine here? Vaccine is used for preventing diseases. In healthy individuals. You know, the children are given with polio vaccine, DPT, hepatitis B, BCG, all these are there. Now COVID-19 vaccine to prevent the getting the disease there. Now vaccine जो है, that the different types of vaccines are there. इसमें एक होता है, first जो होता है, that is called here simply where we have a dead virus, dead bacteria introduced into the body, so that our WBC, white blood cells, our immune system recognize those bacterial proteins and viral proteins and make antibodies for that, of those antigens of bacteria and virus. So here that is through एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड, जिंदा होता है लेकिन पैसिव होता है, देर लाइव जिंदा होता है, एटेन्यूएटेड होता है, इनएक्टिवेटेड, उसको इनएक्टिवेटेड बोलते हैं. फॉर्म में डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते हैं. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं. लाइव होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है. ठीक है. दूसरा तरह का होता है जहां पर डेड पैथोजन, कंप्लीट डेड पैथोजन होता है, that introduced into the human body, which will not cause any infection, but our WBC will recognize those proteins or surface proteins or antigens of the bacteria or virus and make the antibodies. In active form, maybe also the same thing is there, right? Third comes here, what is called vector. Vector based vaccine होता है. What is vector based vaccine? You have the carrier. Vector means carrier. That means you are not using original virus or original bacteria. Particularly it is used in viral infection. Virus के जैसे COVID-19 हो गया. So here the vector may be some other type of virus which doesn't cause infection to the human body. And on the surface of the vector, scientists introduce those kind of antigens of the virus, which is modified. You can say vector is modified with those kind of antigens of the virus, the disease causing virus. So once the vector goes there, that will not cause any disease, because the vector is a non-disease causing virus, but it carry on the surface those proteins or antigens which is of real virus which cause infection. Let's suppose COVID-19. So those antigens are recognized by human body and will make antibodies. तो ऐसा होता है जैसे कि एडिनोवायरस, इसमें ऐसे वेक्टर होते हैं जो इनएक्टिवेटेड होते हैं. ये वेक्टर का काम करता है. दिस एक्ट लाइक ए वेक्टर. And on the surface of this, that is the protein. ये जो प्रोटीन होता है, this type of antigen और प्रोटीन जो है, that is a pathogen, जो कि वायरस होते हैं, जो वायरल होते हैं, वायरस के प्रोटीन्स होते हैं. That means these are the viral which will cause infection. Those antigens are there which cause infection in the human body. तो वो जो वायरस जो कि जैसे COVID-19 स्पाइक प्रोटीन,
So we are not introducing the COVID-19. Here we can, live attenuate means we can introduce the dead form or inactivated form of COVID-19. But here in vector form, we use some other virus as a carrier. But on the surface, we use the protein or antigens of the COVID-19. That comes here. Then comes here fourth, called DNA vaccine. So here what we do, we use recombinant DNA technology to make the proteins of the actual virus, let's say COVID-19. And we insert in the human body, and those proteins as an antigen, our WBC will recognize and make antibodies. So here, that is here, DNA or gene for the viral proteins which act as antigens. That comes into that. Another thing which you will come across, recombinant vaccine there. That is same as DNA vaccine. What is a recombinant vaccine? Where we genetically modify a adenovirus, maybe human adenovirus, chimpanzee adenovirus, and it carries the proteins or antigens of the disease-causing virus. Suppose that COVID-19 virus, that is being carried by the adenovirus. We use genetic modification, recombinant DNA technology, genetic engineering. So here we are having genetic modified GM virus by using genetic engineering. It has been asked in mains exam. So from COVID-19 point of view, I'll take you to the list of such kind of a vaccine there, right, which you will understand there. It has been asked in the pre-exam earlier also there. So let us now look into this one. This one, different types of COVID vaccine. Now look at here, in this website here, curious about how mRNA vaccine. एक है mRNA vaccine also. DNA vaccine I have mentioned, messenger RNA which use transcription. It can read the genetic information of the actual virus and can make that kind of protein inside the body. And our body will recognize those protein and make antibodies. So if the real virus enters, then the antibodies will fight. So if you see here, this is given here, COVID-19 here, the part of the coronavirus, if you look at this part, right, we all know about this messenger RNA, now see here, right. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि gives you cell instruction to make a spike protein of COVID-19. That can be done there, है ना, displaying them on the surface, what you can do there. Then you can see here this one. दूसरा जो है वेक्टर वैक्सीन, जहाँ पर कैरी किया जाता है ऑन द प्रोटीन सब यूनिट ऑन द वायरस कैन बी पार्ट ऑफ इट. ठीक है, वायरल वेक्टर यूज़ करते हैं जो एडिनो वायरस वगैरह है. प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन जहाँ प्रोटीन वगैरह होते हैं उसको यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर सारा है, जैसे कि इफ यू सी हियर दिस काइंड ऑफ वैक्सीन. अब जैसे कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड वी यूज़ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बाय यूजिंग द चिंपैंजी एडिनो वायरस एंड मॉडिफाइड सब प्रोटीन सब यूनिट ऑफ coronavirus. But the Sputnik V carried the human adenovirus with the modified protein of the part of the actual COVID virus. If we take example of Bharat Biotech, the part of the vaccine there, it was a dead live attenuated kind of real virus was given there. तो ऑल ये सब न्यूज़ में रहा है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब जो इसमें जो है ऑलमोस्ट वी आर टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ इट. आई डिस्कस टू मोर टाइप ऑफ एरियाज जो कि न्यूज़ में रहा है. एक है मंकी पॉक्स और दूसरा है लंपी स्किन डिजीज, राइट. सो वी विल गो इनटू दोज टू डिजीजेस बिकॉज दे हैव मेड हेडलाइंस and can be asked in the exam. Let us go into that. So where it came in the news there about this one, that is the
मंकी पॉक्स वायरस जो है, एक डर भी था कि कोविड के बाद ये मंकी पॉक्स वायरस जो है फिर वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो और उसका फिर इम्पैक्ट ना हो, बट इट वॉज कंट्रोल्ड वेरी इन एडवांस बाय WHO एंड इंडिया ऑल्सो दैट। जैसे चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, वैसे ये वायरस था मंकी पॉक्स वायरस, राइट। सो इफ यू लुक एट मंकी पॉक्स वायरस हियर, आई विल जस्ट टेक यू टू द मेन पार्ट ऑफ इट हियर, की फैक्ट्स that you will understand from the point of from WHO point of view there. Now if you look at here this one, ये जो key facts हैं, इसके जो वैक्सीन्स हैं, जो वैक्सीन यूज्ड ड्यूरिंग द स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन, जो स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन, टुडे वर्ल्ड वाइड स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड, राइट। काउ पॉक्स से जो बनाया गया था एडवर्ड जेनर, नाउ देयर इज नो मोर। चिकन पॉक्स इज दैट स्मॉल पॉक्स इन ऑर्डर, सो वैक्सीन व्हिच इज मेड फॉर स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मंकी पॉक्स। तो जो सेम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए जो बनाया गया था वही मंकी पॉक्स के लिए भी यूज होता है वहाँ पर। न्यूअर वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड ऑफ व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ देम, नए वैक्सीन बनाया गया। देन मंकी पॉक्स इज कॉल्ड मंकी पॉक्स वायरस, that belongs to a member of orthopoxo virus। इसमें क्या होता है, स्किन में रैशेस वगैरह होते हैं, डेवलप होता है, फीवर वगैरह ज़्यादा होता है। द सेम एज स्मॉल पॉक्स है। जीनस ऑफ द फैमिली मंकी पॉक्स यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद द सिम्टम लास्टिंग फॉर 2 to 4 weeks। इसके जो सिम्टम्स होते हैं 2 से 4 वीक तक लास्ट करता है, एंड देन सीवियर केसेस में भी ओकर सकता है, और इसमें फर्टिलिटी रेशियो 3 to 6% है। 3 to 6% केसेस में फेटल होता है, जहाँ डेथ भी हो सकता है। Then comes monkeypox is transmitted to humans through close contact with infected person or animal or with material contaminated with virus। कहने का मतलब human to human transmission, at the same time animal to human, monkey and all other animals। तो कहने का मतलब zoonotic है, zoonotic means from animal to human and the human to human contact। At the same time any infected person has used any object, right? If any healthy person come in contact, then the virus can infect that healthy person, very similar to smallpox and chicken pox। So that is what comes here। But monkeypox virus transmitted from one person to another by close contact with lesion, body fluid, respiratory droplet, contaminated material like bedding। मान लीजिए जो जिस जगह सोते हैं, बेड वगैरह है, वहाँ पर है तो उसमें वायरस होगा, उसके कॉन्टैक्ट में अगर आया, या मान लीजिए उसके जो इरप्शन होते हैं, रैश जो होते हैं, लेसियन जो होते हैं स्किन में या फेस में, वो कहीं जब वो नीचे गिरता है ना, सूखने के बाद उसमें वायरस होते हैं, उसके कांटेक्ट में हम आ जाए, या मान लो कुछ उसका बॉडी फ्लूइड है पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन का, जब उसको खोलते हैं उसके जो ब्लड वगैरह कुछ ऐसे बॉडी फ्लूइड, उसके कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आ जाए। दूसरा नेक्स्ट क्या है, एयर ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट होता है उससे स्प्रेड कर सकता है, दैट इज अ मोड ऑफ इन्फेक्शन गिवन हियर। फिर यहाँ पर क्या है, मंकी पॉक्स इज वायरल जूनोटिक डिजीज, बहुत क्लियरली जूनोटिक, एनिमल टू ह्यूमन डिजीज दैट ऑकर प्राइमरी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये अफ्रीका से ओरिजिनेट किया है क्योंकि वहाँ के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकीज, वहाँ से फिर ह्यूमंस में आया, तो वहाँ भी ये चीज़ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, जैसे घाना है, कोंगो बेसिन है, उस जगह पे जो है, एंड ऑक्यूपली एक्सपोर्ट टू अदर रीजन्स। एंटीवायरल एजेंट डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट स्मॉल पॉक्स हैज बीन लाइसेंस फॉर दैट। तो जिससे स्मॉल पॉक्स ठीक होता है। अब वर्ल्ड वाइड स्मॉल पॉक्स नहीं है, इरेडिकेट हो गया है, चिकन पॉक्स है, बस स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया। सेम एंटीवायरल एजेंट और वैक्सीन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मंकी पॉक्स, दैट व्हाट कम्स हियर। तो इसका क्लिनिकल जो है सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स की तरह होता है, जो मैंने बताया। इसकी जो भी क्लिनिकल चीज़ें हैं सिमिलर जो है, जो प्रेजेंटेशन है सेम है ऑर्थोपॉक्सो वायरस के लिए। और ये जो पार्ट ऑफ मंकी पॉक्स है लेस कॉन्टेजियस, स्मॉल पॉक्स ज़्यादा कॉन्टेजियस था, ज़्यादा इन्फेक्शस था, फास्ट स्प्रेड करता था। स्मॉल पॉक्स उस टाइप का था, ज़्यादा फास्ट स्प्रेड करता था। मंकी पॉक्स कम है, मंकी पॉक्स लेस सीवियर इलनेस, इसके इलनेस भी कम होते हैं मंकी पॉक्स के। एट द सेम टाइम कॉन्टेजियस इज लेस देन स्मॉल पॉक्स, राइट। तो मंकी पॉक्स कॉज लेस सीवियर इलनेस
and also less contagious than smallpox, which has been eradicated. That was typically present clinical पर fever, rash होता है, swollen lymph node होता है, may lead to a range of medical complex. Lymph node जो होते हैं हमारे tonsils, बाकी जो lymph वगैरह होते हैं, armpit, neck, the thigh and all, तो swelling हो जाती है, fever होता है, rashes वगैरह होता है. So very similar to smallpox. Symptoms are very similar there, right? So that has been controlled. That's what I mentioned, that there was a fear, scare, but has been controlled there. Now I'm coming to another disease which has made headlines, lumpy skin disease on cattle. है ना, cow और cattle उसमें देखा गया. तो lumpy skin disease जो है, there's another thing which had made headline here. So you can see here, I'll just zoom out here. जो lumpy skin disease जो है, another thing is all current affairs material everywhere you will find here, right? तो ये livestock में cows, buffaloes, उसके skin integumentary बोलते हैं. Integumentary is a medical term for the skin related infection. राजस्थान वगैरह में वहाँ देखा गया था. Lumpy skin disease जो है highly contagious होता है. That means it spread very fast. Viral infection of cattle and buffalo that cause relatively more low mortality. मतलब यहाँ पर डेथ ऑफ कैटल कम होते हैं, मतलब उतना फैटल नहीं है. ठीक है. नाउ डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन. अनदर थिंग इज दैट कई बार जो प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, दैट विल आल्सो रिक्वायर दैट इज इट अ जूनोटिक डिजीज, कैन कम टू ह्यूमंस, अफेक्ट ह्यूमंस. तो डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस, राइट, इज हाईलाइटेड हियर. ठीक है. द डिजीज कैन रिजल्ट इन एनिमल वेलफेयर इश्यूज एंड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन लॉसेस. इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कैटल गेट फीवर, कैटल गेट प्रॉब्लम देयर, सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैटल डिक्रीज during the time of lumpy skin disease, where the cattle is suffering with the disease, right? And if the cattle die, then it is economic loss to the farmers. But from animal to human transmission is not there, right? They will not call it zoonotic. Now if you see here, disease not present in Australia. Another interesting thing, not present in Australia. क्या क्या typically क्या होता है disease में? Cattle will have fever, डिप्रेशन होता है, स्किन नोड्यूल्स होते हैं, ऑन द स्किन नोड्यूल्स विल कम टू दैट, वो नोड्यूल बन जाते हैं स्किन्स में. मिल्क यील्ड कम हो जाएगा, दूध का उत्पादन कम हो जाता है, कम होता है. अबॉर्शन प्रेग्नेंट, अगर कोई कैटल जो फीमेल कैटल है, काउ बफेलो, और जब अगर प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन हो जाता है, फीवर आई होते हैं, नोड्यूल्स डेवलप होता है, दैट इज पार्ट ऑफ इट. तो ये लंपी स्किन डिजीज जो है, ये स्प्रेड करता है बाय इन्फेक्शन, बाय मूवमेंट अफेक्टेड एनिमल्स. कहने का मतलब एनिमल टू एनिमल है. ठीक है. फ्रॉम एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन है, कैटल टू कैटल ट्रांसमिशन है, हाईली कॉन्टेजियस इन दैट नेचर. फिर बाय बाइटिंग इंसेक्ट और पैरासाइट जैसे फ्लाइज, मॉस्कोटिक्स. कहने का मतलब वेक्टर बॉर्न है. आई एम गिविंग यू सम की वर्ड्स देयर. वेक्टर बॉर्न, जैसे लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका, दे स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो. सो इवन थ्रू मॉस्किटो, insect, tick, from animal to animal transmission can be done by biting insect or parasites such as flies, mosquitoes, ticks. Contaminated equipment, अगर कोई equipment है, doctor who is treating that infected cattle, and the same contaminated equipment, it gets in touch, it is used without sanitation to the other animal, healthy animal, so their healthy animal can get infection of lumpy skin disease. Then comes here directly from animal to animal in some cases. March 2022, lumpy skin disease was officially reported by Indonesia on the island of Sumatra and in Singapore. Right? तो ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. इसमें गवर्नमेंट एक्शंस भी किया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए. तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अगर कुछ और चीज़, अगर मैं इसको और कुछ और ब्रीफ में कुछ और डिजीज के बारे में बताऊं, एक है बर्ड फ्लू का न्यूज़ में रहा है, एवियन इन्फ्लुएंजा. ठीक है. अब इसमें यह भी देखा गया कि बर्ड फ्लू जो है फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन इन्फेक्शन, राइट. एक है ह्यूमन बर्ड टू बर्ड एवियन इन्फ्लुएंजा, दैट इज पार्ट ऑफ, एंड देयर आर दोज वेरी इन्फेक्शियस वायरस
and second comes from the bird to the human, similar to zoonotic. वो न्यूज़ में रहा है। कुछ साल पहले निपा वायरस वाज इन द न्यूज़, दैट वाज पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में रहा, केरला का न्यूज़ में था। इन केरला फ्रूट बैट, थ्रू दैट ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमंस। उससे पहले नॉर्थ बंगाल में इसका हो चुका है, बांग्लादेश में हुआ है, राइट। अगेन द वायरल इन्फेक्शन and Nipah virus is fatal. It affects the brain and nervous system, and the cases people die also there. Swine flu was in the news long way back, but is now controlled. Swine flu caused pandemic very similar to COVID-19, right? Ebola virus was in the news in terms of Africa, West Africa and Central Africa. That was again controlled. कहने मतलब डिजीज की बात करें तो हमेशा न्यूज में। कोविड का आपको पता है, कोविड में 2-3 साल प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। वैक्सीन का आज मैंने बताया वहाँ पर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वैक्सीन पार्ट, बट अगेन यू नो वेरिएंट ऑफ कंसर्न, डेल्टा वेरिएंट, राइट। जब कोविड का ऑनसेट स्टार्ट हुआ, सेकेंड वेव जो इंडिया में था, डेल्टा वेरिएंट वेयर मोस्ट पीपल डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर इक्विपमेंट एंड प्रॉपर केयर देयर। ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन वाज लेस but it was also considered to be a concern, but it doesn't cause that kind of high level of infection there and death, but the delta caused there. Alpha was first, then beta, then delta. Delta was more dangerous, then omicron was less. Now recently there was another variant of COVID-19 which evolved from omicron in China. Again there was there, but again it got controlled there. India में spread नहीं किया वो, क्योंकि अब क्या है ना कि गवर्नमेंट्स हैव बिकम वेरी वेरी केयरफुल एंड वी आर एबल टू क्वारंटाइन एंड डू द प्रॉपर टेस्टिंग एंड डू द ट्रीटमेंट फॉर कोविड केसेस। रिमेंबर दैट कोविड वायरस और ये से इन्फ्लुएंजा वायरस और बर्ड फ्लू, वो जितने भी हैं, दीज आर आरएनए वायरस, दे कंटेन आरएनए एंड दे म्यूटेट एंड दे डू द फास्ट म्यूटेशन। कोविड के केस में फास्ट म्यूटेशन होता है। तो व्हाट हैपन व्हेन इट म्यूटेट, देन द स्पाइक प्रोटीन on the surface that get changed. It becomes a new type of variant of the COVID-19, capable of doing infection, and even can even bypass the immunity which we got through vaccine. जैसे हमने वैक्सीन लिया, एंटीबॉडीज बना, अब उस प्रोटीन्स पे बना है जो उस वेरिएंट के कोविड पे है। अब कोविड चेंज हो गया, अगर उसका आरएनए चेंज हो गया, म्यूटेट हुआ, उसके सरफेस प्रोटीन चेंज हो गया, तो एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। we knew we have to get new dose of the COVID vaccine. फिर हमें नया वैक्सीन का डोज लेना पड़ेगा जिसमें वो प्रोटीन होंगे जो कि एंटीबॉडी बनाएगा, तो नए वेरिएंट को वो खत्म कर सकता है। तो द वॉर कीप्स ऑन गोइंग, है ना। बट नाउ वी हैव बिकम इन टर्म्स ऑफ लिविंग विद द कोविड, है ना। प्रॉपर सिस्टम हैज बीन नाउ डेवलप्ड, वैक्सीन्स हैव बीन डेवलप्ड, पीपल हैव गॉट इम्यूनाइज्ड ऑल्सो देयर, और हमारे वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं कंपेयर टू, तो उसमें भी बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। और वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंडिया वॉज एबल टू रिकवर बैक। अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये भी आ रहा है, हिंदू पेपर हैज कवर्ड दैट, कि दिस इज द लैब लीक फ्रॉम चाइना। अमेरिका, यूएसए इज नाउ पुटिंग अ ब्लेम ऑन चाइना दैट दिस पर्टिकुलर वायरस वॉज लीक्ड फ्रॉम लैब ऑफ चाइना। और ये भी ब्लेम आ रहा है कि इट इज नॉट अ नेचुरल टाइप ऑफ वायरस बट लैब बेस्ड वायरस। बट व्हाट इज द ट्रूथ, राइट? चाइना विल नेवर डिस्क्लोज। मेनी ऑफ द फैक्ट्स हैव बीन सप्रेस्ड एंड डिस्ट्रॉयड कि उसकी सच्चाई क्या है। WHO ने साफ कर दिया है कोविड-19 और कोरोना वायरस इज नॉट जीनोटिक, वो जीनोटिक नहीं है, is not genetic, right? It is not confirmed कि from bat to human, pangolin to human, it is not confirmed. अब एक theory था कि is a biological weapon, COVID-19 made in the lab, leaked from the lab there. अभी recently फिर न्यूज़ में है, US FDA is now targeting China on this matter. अब क्या ट्रूथ है वो आने वाले टाइम में सामने आएगा। But yes, the entire system has been developed with mask, equipment, oxygen cylinder, vaccines, everything has been into place. ठीक है, during the time of COVID, DRDO has developed
2DG, एक मेडिसिन डेवलप किया गया था 2DG, डीऑक्सी ग्लूकोज। तो वो क्या है, 2DG मेडिसिन है, उसको खाने पे द सेल इन्फेक्टेड विद COVID-19 आर डिस्ट्रॉयड एंड ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट सफरिंग विद कोविड इंक्रीजेस। तो डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर बिकम लेस। DRDO के लैब ने डेवलप किया था, उसका क्लिनिकल ट्रायल वगैरह और बाकी चीज़ें और चीज़, तो वो ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहा, कुछ टाइम के लिए न्यूज़ में रहा। ठीक है, कोविड के जब कम होने के केसेस जब होने लगे तो एक आया था मुको, है ना, जो होता फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगल डिजीज़, वो न्यूज़ में आया था। तो जो लोग कोविड पेशेंट थे, कोविड रिकवर हुए, जिनका इम्यूनिटी कम था, दे गॉट इन्फेक्टेड विद द ब्लैक फंगस डिजीज, दैट मेड हेडलाइन देयर। तो ये सब जो टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ, अगेन यू हैव टू गो थ्रू द करंट अफेयर मटेरियल्स, कहीं ना कहीं इधर कोई ना कोई टच में क्वेश्चन आ सकता है। एट द सेम टाइम वॉट एवर आई हैव मेंशन्ड फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, द टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड, that again are important for the exam and you have to do it thoroughly. Plus all the miscellaneous topics at the end of this video what I discussed, please go in detail part of it. ठीक है, जो कुछ भी आपने क्लास में पढ़ा है, बाकी जहाँ भी करंट अफेयर मटेरियल पढ़ा है बायोटेक और हेल्थ का, उसको और थॉरली से करना है। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम देयर इन द एग्जाम देयर, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने हाईलाइट किया जीनो ट्रांसप्लांटेशन या बाकी जो चीज़ें हैं, दैट पार्ट आई हैव हाईलाइटेड देयर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो मैंने अभी जो चीज़ों को बताया यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें हाईलाइटेड है और इस पर ज़्यादा करंट अफेयर मटेरियल्स में इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, वैक्सीन वगैरह क्वेश्चन आ चुका है, CRISPR-Cas9 क्वेश्चन आ चुका है, बायो प्रिंटिंग अभी हेडलाइन में है, जीनोमिक स्टडी पे आ रहा है वहाँ पर, प्लस जो मैंने भी बताया अभी जो आप लोगों को जीनो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंट वहाँ पे एरिया है। ठीक है, तो ये सब एरियाज को अच्छे से करना है, प्लस जो मैंने डिजीज़ वगैरह बताया। तो आई होप दिस एरिया यू विल डू इट थॉरली फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर एंड प्लीज रीड and prepare this topic. I'll meet again. Thank you. Take care. Bye-bye.